As in as in previous session or previous lecture, we can see that what is the pure bending and what is the direct stresses or pure bending. Okay, so in the same things, we more know about the bending stresses and their applications. Okay, so for these things, I will use one more video regarding the bending stresses. So first we go through the video where it is explained that what is the deformation of the beam. What is the deformation of the beam? It may be axial or it may be in the form of bending. Okay, so let's understand the concept about the deflection of the beam. Okay, To carry loads in a whole range of different structures, and it's important for engineers to be able to predict how much a beam will deflect when loads are applied to it. Allow a beam to deflect too much, and it could cause damage to other parts of the structure, feel unsafe to the user, or fail to meet its intended function, even if stresses in the beam are low and there's no risk of failure. Construction codes typically define what the maximum allowable deflection is, and so it's up to the engineer to figure out how much the beam will deflect. in this table, beam classification means cantilever beam, and here is the limit of the deflection. Okay, so there is the length 180 and beam carrying the element with the brittle finish. Span is 360. So understand the There are quite a few different approaches that can be used to do this. I'll cover 5 of the more common methods in this video. All of these methods make the same important assumption, which is that deflections are small and stresses remain in the elastic region. For this reason, the deformed shape of the beam is called the elastic curve. We can define x as the distance along the axis of the undeformed beam, and y as the vertical deflection of the beam. The objective is to figure out how y varies along the length of the beam. We will assume that there's no displacement along the x-axis. We're also interested in the angle of rotation of the beam, theta. Let's take a closer look at the angle. We can define the slope of the beam as dy divided by dx. Since we're limiting ourselves to scenarios where deflections are small, we can apply the small angle approximation, and so we can assume that the angle of rotation is equal to the slope of the beam. In other words, the angle of rotation is equal to the first derivative of y with respect to x. We can start thinking about how beams deflect under load by reviewing the moment curvature equation. It allows us to calculate the curvature of a beam for a given bending moment. M is the bending moment, R is the radius of curvature of the deformed shape, and EI is the flexural rigidity of the beam, which defines how much the beam will resist bending due to the stiffness of its material and due to its cross-sectional shape. The term 1 over R is the curvature of the beam. The moment curvature equation is the first step towards being able to calculate the deflection of a beam, since it gives us information about how the beam will deform for an applied bending moment. It turns out there's a mathematical equation that can be used to calculate the curvature at any point along a curve.
We can combine this with the moment curvature equation to get an expression that relates the deflection of the beam and the bending moment along it. But this equation is still quite complicated, so let's try and simplify it. Since we're limiting ourselves to elastic deformation and assuming that the slope of the elastic curve is small, the dy over dx term will be small. And since it's squared, it will be even smaller, and so can be neglected. This gives us a much simpler differential equation defining the deflection of the beam. All we need to do to get an expression for the deflection along a beam is integrate the equation twice. This is called the double integration method. It's easiest to understand how the method works using an example. Here we have a cantilever with a load applied at the end. We'll start by drawing the free body diagram and applying equilibrium to determine the reaction forces. Next, we want to calculate the bending moment along the beam. If we draw a free body diagram of a slice of the beam, we can see that as we move along the beam, the bending moment increases linearly with the distance from the concentrated force P. So the bending moment M is equal to minus P times X. We can insert this expression for M into the deflection differential equation and apply the double integration method to figure out how the beam will deflect. E and I are constant along the length of the beam, so we can pull them outside of the integral, and then integrate the equation for M with respect to X. Remember that whenever you integrate, you need to add a constant of integration at the end. We'll call it C1. It's an unknown for now. Then we integrate a second time, remembering to add a second constant of integration. And so we now have an equation that defines the deflection y of the beam. The only problem is that we have two unknown constants. Fortunately, we can use what we know about the deflection and the slope of the beam at the support to calculate C1 and C2. At the fixed end, the beam cannot rotate, so the slope dy over dx must be equal to 0. This allows us to calculate C1. And at the same location, the deflection y must also be 0, which gives us C2. And so, we've solved the deflection curve for this beam. In this case, it's obvious that the maximum deflection will occur at the end of the beam. For cases where the location of maximum deflection is less obvious, like for this simply supported beam, we can observe that the slope of the beam will be 0 at the location of maximum deflection. So by setting the slope equation to be equal to 0, we can figure out the location of y max. Boundary conditions are key to applying the double integration method. We just saw that at a fixed support, the displacement and the slope must both be 0. At a pinned support, the beam is free to rotate, so the slope can be non-zero, and only the boundary condition for the displacement applies. The same is true for a roller support, which is also free to rotate. The double integration method is quite easy to apply, but even for some quite simple configurations like this one, the bending moment won't be defined by a single expression along the full length of the beam. To apply the double integration method in situations like this, we need to split the beam into sections and determine separate expressions for the bending moment in each section. We then apply the double integration method to the different sections, and we end up with a lot of different constants of integration. By considering the boundary conditions at the supports, we can calculate some of these constants. To solve the remaining constants, we need to consider what's called the continuity condition between the different sections of the beam. Since the beam remains continuous across the transition between these two sections, the displacement and slope must be the same at the right of section 1 and at the left of section 2.
This gives us a system of equations we can solve to determine the remaining constants of integration. Having to split the beam into sections and solve a system of equations complicates things and makes it more difficult to solve the deflections of the beam, particularly for cases where the beam needs to be split into a large number of sections. Fortunately, there's a powerful mathematical trick that allows us to define a bending moment profile like this one using a single expression, so that we can apply the double integration method without having to split the beam into sections. It uses singularity functions to make solving this type of beam much easier. They are defined using this special notation and follow specific rules. When the expression inside the bracket gives a positive number, the output is the expression, but when it is negative, the output is 0. These are called Macaulay brackets, and applying them to calculate the deflection of beams is called Macaulay's method. Their behavior allows us to essentially turn different terms in the bending moment equation on and off as we move along a beam. We can work through the beam we looked at earlier to understand how. अंकल जी इस कैंटीन दूर दूर तक कस्टमर्स को नजर आए इसलिए गूगल Let's see how the bending moment changes as we move along the beam. In the first half of the beam, only the reaction force contributes to the bending moment, and the moment arm is equal to x. But once we get past halfway, we need to include the effect of the concentrated load as well. And so the bending moment expression has to include an additional term. The moment arm is equal to x minus half the length of the beam. If we replace the brackets in this expression with Macaulay brackets, the second term in the expression will be switched off in the first half of the beam, since x minus L over 2 will give a negative number. And so this expression using Macaulay brackets defines the bending moment along the entire length of the beam. The same thing works for distributed loads, although it's slightly different. When using Macaulay brackets for a uniformly distributed load, the bracket has to appear twice, once in the magnitude of the load and once in the moment arm. The moment arm is the distance to the center of the distributed load, so is equal to the length over which the load is applied, divided by 2. And so we get this expression, where the Macaulay bracket is squared, and the distributed load is divided by 2. This expression is only valid if the distributed load extends all the way to the end of the beam. If it doesn't, we have to adjust the expression to balance the part of the load that's missing. Here's how you can apply Macaulay brackets for a few other load types. Macaulay brackets also have special rules for integration. They are integrated in a similar way to polynomial functions, like this, which makes it easy to apply the double integration method when using them. Let's go back to our beam with a concentrated load and solve the deflections using Macaulay's method. Since we have a single expression that defines m along the full length of the beam, we no longer need to split the beam into sections to solve it, and we can just apply the double integration method as we normally would. The double integration method can be quite time-consuming to apply, even when using Macaulay's method. To save us from having to go through the integration process every time we want to calculate the deflection of a beam, reference texts often include tables which list the deflection equations for a set of typical load and support configurations. This is more powerful than it might seem at first glance, because the principle of superposition can be used to apply this small set of solutions to a much wider range of problems. It allows us to combine different load configurations on top of one another,
and to calculate the overall deflection caused by the combined loading by summing up the contribution of each load to the total deflection. This is a really powerful technique that's not just used for the analysis of beams, but also more widely in structural analysis. For the superposition method to be applicable, deflections must vary linearly with the applied loads. And deflections need to be small, since large deflections could mean that the applied loads don't act independently. Sometimes when analyzing a beam, we might only be interested in calculating the angle of rotation or the displacement at a single location, instead of along the entire length of the beam. There's another method we can use for cases like this, which is called the moment area method, because it's based on the area under the bending moment diagram. If we take 2 points, 1 and 2, and we integrate both sides of the deflection differential equation between those 2 points, we end up with this equation. The term on the left is the change in angle between both points, which we can visualize by extending lines tangent to the elastic curve at the 2 points. And the term on the right is just the area under the bending moment diagram between both points, A, divided by the flexural rigidity, EI, assuming that both E and I are constant along the length of the beam. So, to calculate the change in angle between 2 points along the elastic curve, all we have to do is divide the area under the bending moment diagram between the 2 points by EI. This is the first moment area theorem. If we rewind and multiply both sides of the deflection differential equation by x before integrating, we can get another useful equation. This time, the integration is a bit more complicated, since we need to use integration by parts. But we end up with this expression, which is the second moment area theorem. It tells us that the vertical distance between point 2 and the tangent line at point 1 is equal to the first moment of the area of the bending moment diagram, divided by EI. The first moment of area is just the area under the diagram, multiplied by the horizontal distance from point 2 to the centroid of the area. This vertical distance is called the tangential deviation. It might not seem that useful, since it doesn't directly give us the deflection at point 2. But if we calculate the tangential deviation at the other end of the beam, we can then use trigonometry to figure out the actual deflection at point 2. The moment area method is particularly useful when there's a point along the beam where we know that the slope of the elastic curve will be equal to 0, since in that case, calculating the tangential deviation gives us the deflection directly. This is why the moment area method is often applied for cantilever problems. Let's look at an example. We're interested in the deflection and angle of rotation at the free end, so let's define point 1 at the fixed support and point 2 at the free end. Because the angle and deflection are 0 at point 1, the moment area method will give us the deflection and angle at point 2 directly. We can define x as the horizontal distance from the free end and draw the bending moment diagram. To apply the moment area method, we need to calculate the area under the bending moment diagram between points 1 and 2, and the distance between point 2 and the centroid of the area. It's easy to do this by splitting the diagram into 2 triangles and a rectangle. The areas are easy to calculate. And for the centroids, we just need to remember that the centroid of a right-angled triangle is 1/3 of the way down and 1/3 of the way across from the right angle. Then we can just plug the numbers into the first and second theorems to calculate the angle and deflection at point 2. There's one last approach to analyzing the deflection of beams that I'd like to cover, which is an energy approach that uses the concept of strain energy. When a body is deformed elastically, energy is stored within it in the form of strain energy. For a beam deformed by bending,
The strain energy is a function of the bending moment, and it can be calculated using this equation. It's common to neglect any shear deformation and assume all of the strain energy is coming from pure bending. Castigliano's theorem states that the deflection at the location of an applied load along the line of action of the load is equal to the partial derivative of the strain energy with respect to that load. The deflection can be a displacement or an angle of rotation. Because the bending moment term is squared in the strain energy equation, it's usually easier to move the partial derivative inside of the integral, like this. Let's look at an example. The bending moment along the beam shown here is defined by this expression. We can calculate the partial derivative of m with respect to p. Using Castigliano's theorem and integrating between 0 and L, we get an expression for the displacement at point A. The powerful thing about Castigliano's theorem is that the load we consider doesn't even have to be a real load. If we want to determine deflections at a location where no load is applied, we can just apply a fictitious force. We include the fictitious force in the bending moment equation, and then once we've calculated the partial derivative of the strain energy with respect to that force, we can set it to 0 to obtain an equation for the deflection at that location. The fictitious load can be either a moment or a force. Applying a moment allows us to calculate the angle of rotation, and applying a force allows us to calculate the deflection y of the beam. Applying a fictitious moment at point A allows us to calculate the angle of rotation at that point. This time, we take the partial derivative of m with respect to ma. Once we have an expression for the angle of rotation, we can set the fictitious moment ma to be equal to 0. Although it might be slightly more difficult to conceptualize than the other methods we've looked at, Castigliano's theorem can be very powerful when applied properly, and it has uses that extend well beyond the analysis of beams. With experience, you'll be able to select the method that will be easiest or most appropriate to apply, based on the specifics of the situation you are analyzing. But Okay, students. Now here, these are the double integration method and McEnglish method, moment area method, and superposition method and Castigliano method. So, out of these, we can use the method moment of inertia and the double integration method. These two methods we can use for calculating the problems. Okay, so now I can give you a problem. So solve a problem related to the bending moment, or we can say that the pure bending of a beam, of a circular hollow beam. Okay, so we can see that in this problem. बेंडिंग ऑफ बीम का एक न्यूमेरिकल आपके लिए लाए हैं। ध्यान से इस न्यूमेरिकल को आप पहले एक बार पढ़िए हमारे साथ, उसके बाद कैसे इसको सॉल्व करना है उसके स्टेप्स को समझिएगा। तो आज के क्वेश्चन में कह रहा है अ स्टील बीम ऑफ हॉलो स्क्वायर सेक्शन, मतलब जो बीम है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्क्वायर, और वो हॉलो है। हॉलो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि बीच में उसमें क्या होगा, मटेरियल नहीं होगा। डायमेंशन क्या दिया है सेक्शन का, ऑफ 60 mm आउटर एंड 50 mm इनर साइड, इज सिंपली सपोर्टेड ऑन अ स्पैन ऑफ 4 मीटर, यानी बीम का जो स्पैन है यानी लेंथ है वो कितना है, 4 मीटर है। फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड द बीम कैन कैरी एट द मिडिल ऑफ द स्पैन, मतलब बीम पे मिडिल में कितना फोर्स, कितना लोड
बीम कैरी कर सकता है इफ़ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सेड 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर हमें क्या गिवन है? ये हमें गिवन है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। नॉट टू एक्सीड का मतलब बेंडिंग स्ट्रेस 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को। So students, in this problem, what we have to कि हमको मैक्सिमम लोड फाइंड आउट करना है जो कि हमें बेंडिंग मोमेंट दे सके जो 120 न्यूटन पर मीटर पर एम स्क्वायर से ज्यादा ना हो। मतलब हमको फोर्स फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फोर्स गिवन नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स नाउ। सो जस्ट टेक द सॉल्यूशन नाउ। और जो बीम की स्पैन यानी लेंथ है, बीम की लेंथ कितना है? ये है 4 मीटर। 4 मीटर। क्रॉस सेक्शन जो बीम का है, बीम का क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से में गिवन होगा। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाना चाहें तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर जिसका बेस और हाइट दोनों इक्वल होंगे। और ये हॉलो है। हॉलो का मतलब ये है कि इसके इनर साइड में मटेरियल नहीं होगा, इसके इनर साइड में मटेरियल नहीं होगा। मतलब बीम में सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं हैचिंग कर रहा हूँ, या आप सैडेड पोर्शन कह सकते हो, इतना ही बीम का मटेरियल है, बीच में हॉलो है। इस टाइप का क्रॉस सेक्शन है बीम का ये। और इसका जो डायमेंशन गिवन है, इसमें आउटर जो दिया गया है, ये दिया गया है 60 mm। 60 mm। तो ये आउटर डायमेंशन, इसका विड्थ भी, ये भी कितना हो जाएगा? 60 mm। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपको दिया है स्क्वायर सेक्शन। स्क्वायर में आप जानते हो बेस और हाइट दोनों इक्वल होते हैं। और जो इनर डायमेंशन है, इनर डायमेंशन ये कितना है? ये हमें दिया है 50 mm। इसका इनर डायमेंशन 50 है और आउटर डायमेंशन 60 है। आप जानते हो विड्थ और डेप्थ दोनों इक्वल होते हैं स्क्वायर के केस में, यानी बेस और हाइट दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर मैं विड्थ की बात करूं आउटर का तो 60, और डेप्थ की बात करूं आउटर का तो वो भी 60 हो जाएगा। इसी तरीके से इनर आपका 50 होगा जैसा क्वेश्चन में गिवन है। और ये डायमेंशन की यूनिट क्या है? mm। अब बीम कितना है? बीम की लेंथ है 4 मीटर। तो हमारी जो बीम है वो कुछ इस टाइप से होगी। मैं एक बीम यहाँ बना लेता हूँ। ये तो क्रॉस सेक्शन है, बीम मान लीजिए, ये मान लेते हैं ये हमारी बीम है। मैं एक्चुअल बीम तो हम लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअल बीम का क्रॉस सेक्शन फिर हमें इसके बराबर बनाना पड़ेगा। मैं एक बीम बना लेता हूँ। और ये जो बीम है क्वेश्चन में कह रहा है सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड का मतलब एक सपोर्ट इस एंड पे होगा और दूसरा सपोर्ट इस एंड पे होगा। और इसकी जो लेंथ है बीम की, ये कितनी है? 4 मीटर। बीम की लेंथ है 4 मीटर। आपसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड का मतलब होता है, कंसंट्रेटेड लोड का मतलब पॉइंट लोड है। कहाँ पे लगेगा? द बीम कैन कैरी एट द मिडिल ऑफ द स्पैन, यानी इसके सेंटर में, सेंटर में कितना लोड बीम कैरी कर सकता है। हमें ये फाइंड करना है कि बीम कितना लोड कैरी कर सकता है सेंटर में। सेंटर का मतलब अगर यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये 2 मीटर होगा। इसी तरीके से इस तरफ की भी डिस्टेंस कितना हो जाएगी? 2 मीटर। अब एक बार क्वेश्चन को आप फिर से समझिए हमारी लैंग्वेज में। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हुई। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है एक बीम जिसकी लेंथ है 4 मीटर, जिसकी लेंथ है 4 मीटर। और आपसे कह रहा है कि इस बीम के सेंटर पे कितना लोड मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना लोड हम अप्लाई कर सकते हैं अगर बीम का क्रॉस सेक्शन हॉलो है, जिसमें आउटर डायमेंशन 60 और इनर डायमेंशन 50 है। ये आपसे पूछ रहा है लोड कितना होगा। और ये भी कह रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपका 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर होना चाहिए। तो आप जानते हो इसको फाइंड करने के लिए, हमें W फाइंड करने के लिए किस फार्मूले पे जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा, हम लोगों ने बेंडिंग इक्वेशन में एक फार्मूला फाइंड किया था, अगर आपको याद हो, एक इक्वेशन फाइंड किया था फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन
हम लोगों ने दो पार्ट में प्रूव किया था, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई बाई आर। हम लोगों ने इस टाइप से फाइंड किया था, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई और इक्वल टू ई बाई आर था। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई रोल नहीं है। तो हम बीम बेंडिंग इक्वेशन का एक पार्ट देखते हैं जिसमें सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू होता है एम अपॉन आई। यहाँ से सिग्मा हमें पता है, वाई हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए वाई मैक्स कितना होगा, वाई मैक्स आपका हो जाएगा 60/2। अगर हम वाई मैक्स की बात करेंगे, वाई मैक्सिमम कितना होगा, तो वाई मैक्सिमम आप जानते हो ये रेक्टेंगल है, तो इसमें आपको आपकी जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस, न्यूट्रल लेयर इसका सेंटर में होगा। न्यूट्रल लेयर जो होगा वो इस क्रॉस सेक्शन का सेंटर पे होगा। तो न्यूट्रल लेयर से आउटर मोस्ट लेयर की जो डिस्टेंस होगी वही वाई मैक्स होगी। मतलब न्यूट्रल लेयर से ये जो आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपका वाई मैक्स होगी, वाई की यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो वाई मैक्स कितना होगा आपको मैंने बताया भी था कल प्रीवियस लेक्चर में, ये आपका h/2 या फिर d/2। तो हमारा d कितना है, डेप्थ 60 है, तो 60/2 अगर हम कर देंगे 60/2 तो ये कितना आ जाएगा 30 mm। तो वाई मैक्स यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए। हमें वाई मैक्स पता है, हमें सिग्मा पता है, हम आई पता करते हैं क्योंकि आई हमें नहीं पता। तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना चाहें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हॉलो सेक्शन, ऑफ सेक्शन में केवल लिख रहा हूँ। फार्मूला आप जानते हो, हॉलो सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इक्वल टू आउटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लें और इनर का उसमें से माइनस कर दें, तो जो शेडेड पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। अगर हम आउटर को कैपिटल बी और कैपिटल डी लिख दें तो BD³/12, आप जानते हो BD³/12 ये आउटर का होता है, माइनस इनर का स्मॉल बी और स्मॉल डी (3/12) ये होता है रेक्टेंगल का। मैंने फार्मूला किसका लिखा, रेक्टेंगल का लिखा। दोनों में बेस 12 कॉमन हो जाएगा और माइनस करके फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये हमारा क्या है, हमारा स्क्वायर है, यानी हमारा बी और डी दोनों इक्वल हैं। यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो 60 × 60 क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60⁴। आप जानते हो हमारा b भी 60 और d भी 60 है, तो 60⁴/12 माइनस यहाँ पे b और d दोनों 50 हैं, तो 50 × 50 क्यूब कितना हो जाएगा 50⁴/12। अगर आप 50 × 50 क्यूब भी नहीं लिखते हो तो ये फार्मूला सीधे d⁴/4/12 भी आप लिख सकते हो स्क्वायर के केस में। मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसके लिए आपने सेपरेट यूनिट पढ़ा हुआ है, आप अच्छे से जानते हो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेडेड पोर्शन का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 60⁴/12 माइनस 50⁴/12। तो यहाँ से हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये आ जाएगा 5591.6667। सभी डायमेंशंस इसमें mm में है तो यूनिट हो जाएगी mm⁴। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो y पता है, i पता है, सिग्मा भी नोन है। हमें फाइंड करना है w, हमें m नहीं फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कंसंट्रेटेड लोड कितना होगा। तो इस w को फाइंड करने के लिए हमें m देखना पड़ेगा कितना होगा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला आपको बताया है कि अगर कोई बीम सिंपली सपोर्टेड है, इफ़ एनी बीम इज सिंपली सपोर्टेड एंड लोड इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द बीम, और अगर लोड आपका बीम के सेंटर पे लग रहा है तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, मैं यहाँ लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू कंसंट्रेटेड का मतलब पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड लोड, और बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम एट सेंटर, तो मैंने आपको बताया था ये होता है WL/4,
WL/4। तो W हमें पता नहीं कितना है, तो W को हम मान लेते हैं कि W है इंटू लेंथ कितनी है 4 मीटर, तो W इंटू 4, और ये 4 मीटर में है, mm में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻³ अपॉन 4। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिल गया, यहाँ से हमारा जो m आ गया, और करके लिख सकता हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m इक्वल टू आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ W। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अब हमें मिल गया W के टर्म में। अब देखिए हमें फाइंड भी करना है W, और हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी आ गया इन टर्म्स ऑफ W। तो अब सभी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिख लिया था, बेंडिंग इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को पहले इसीलिए लिखा था जिससे आपको पता हो कि आपको फाइंड क्या करना है, और उसे फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या पहले पता करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट W, तो यहाँ हम सभी को पुट कर देते हैं। तो देयर फॉर सिग्मा हमारा कितना है 120, तो 120 अपॉन वाई, तो वाई मैक्सिमम, क्योंकि हमारा सिग्मा मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम का मतलब इसके आउटर सरफेस पे। आप जानते हो मैंने आपको बताया था जब बीम को बेंड करेंगे तो मैक्सिमम टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस हमेशा आउटर लेयर पे होगा, जो सबसे आउटर फाइबर होगा, सबसे बाहर की सरफेस होगी, वहीं पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो होगा या बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कुछ इस टाइप से हमने बीम को जब बेंड किया था तो आपको बताया था कि जब हमारी बीम बेंड होती है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है। तो एक लेयर होती है जहाँ पे आपका आपका ना तो टेंसाइल स्ट्रेस होता है ना ही कंप्रेसिव, यहाँ पे सब कुछ जीरो होता है, यहाँ पे स्ट्रेस क्या होता है जीरो, और यहाँ पे ये जो लेयर है यहाँ पे आपका सिग्मा मैक्स होता है, और ये जो लेयर है यहाँ भी आपका सिग्मा मैक्स होता है। ये आपका टेंसाइल होगा मैक्सिमम, और यहाँ का सिग्मा मैक्स क्या होगा कंप्रेसिव होगा। नेचर अपोजिट होंगे, लेकिन कंप्रेशन आउटर लेयर्स पे मैक्सिमम होती हैं। तो ये आउटर लेयर हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया वाई मैक्स के नाम से, जो कि 60/2 आया है 30 mm। ध्यान से समझिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो सिग्मा मैक्स जब हम पुट करेंगे तो नीचे वाई मैक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो वाई मैक्स हमारा कितना है 30, ये भी mm में है, तो यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया है 10⁻³ इंटू W अपॉन आई। आई हम लोगों ने फाइंड किया है 55559166.67, और ये भी है mm⁻4 में। तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ मीटर में था तो इसको हम लोगों ने mm में चेंज कर लिया था, इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से एक अननोन W है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो और W इक्वल टू, कैलकुलेशन आप लोग भी करिएगा, इनकेस कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देता हूं। तो जब भी आप हमारे वीडियोस को देखा करिए, कहीं आपको लगता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, और एक बार आप हमारे भी कमेंट को चेक कर लिया करिए, वहाँ पर अगर कोई करेक्शन होता है तो मैं वहाँ मैंसन कर देता हूँ। तो W इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 120 इंटू 559,166.67 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से हमारा W आ जाएगा, और करके W इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2236.67 न्यूटन, ये आ गया हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड। इतना लोड, इतना न्यूटन, यानी 2236 पॉइंट। So, students, in this problem, we have to find out the solution when the maximum allowable bending moment, sorry, maximum allowable stresses is provided. Then we have find out the whatever the maximum load apply on the beam. So this is if maximum stress is 120 Newton per millimeter square, then we have to apply around 2236 Newton on the beam at the center point. Okay, so this is the solution of given problem.